On behalf of Campus Chronicles team, this inaugural session is all about literature and creative writing. In this series, I would like to take your sincere attention to introduce dignitaries on the dais. Anisha ji, she is a poet and a PhD research scholar at Jamia Millia Islamia University. She treasures literary as well as creative writing experiences. Anisha ji has written and presented scholarly papers at various reputed conferences. Her poetry is also widely published in magazines and anthologies based on India, US, and Canada, and elsewhere. She has been featured in multiple interviews, open mics, and has considerable experience in writing, editorial, and publishing fields. Her debut poetry collection, they have a name for it, is upcoming with Alien Buddha Press, the US. Now I'd like to call Vivek ji to facilitate Anisha ji. Have a round of applause for Anisha. Sabreesh has completed this PhD at Center for Studies in Science Policy, School of Social Science, JNU, New Delhi. His multidisciplinary academic research at the JNU included multidisciplinary areas of traditional medical knowledge, intellectual property rights, and Indian philosophy of science with related research and publications. He has earlier worked as a consultant with the Council for Scientific and Industrial Research, CSIR, Ministry of Earth Sciences and Vigyan, Bharati, VIBHA. He has also authored a brief history of science in India. Please give a round of applause. Now I'd like to call upon guest Sabreesh ji to interact with. Good afternoon to one and all. Uh, can we have some of the people sitting on the back coming on front, if you don't mind? Okay. So, are you all comfortable with English? या तो मैं हिंदी में बोलूँ क्या है या दोनों यूज करूँ दोनों ठीक है तो जैसे आज का सेशन क्रिएटिव राइटिंग पे है मैं ओपनिंग में ही एक स्टेटमेंट बोलना चाहता हूँ कि लिखना है तो अभी से शुरू करना है कि देयर इज नो आई स्टार्ट फ्रॉम टुमारो और देयर इज नो आई स्टार्ट फ्रॉम टुडे इवनिंग अगर लिखना है तो अभी से शुरू करना है एंड जब हम बोलेंगे लिखना है इट नीड नॉट बी इन अ फुल फ्लेज्ड पेपर अगर आप एक पेपर में अगर आप एक छोटा सा आइडिया को इवन इफ यू स्क्रिबल अ सेंटेंस technically it is writing but then when you extend that keep on going it may go into essay अगर और थोड़ा लिख लिया तो फिर आप एक पैम्पलेट बन सकते हैं अगर और थोड़ा लिख लिया तो रिसर्च पेपर बन सकते हैं इफ यू गो फर्दर देन इट टेंड्स टू बिकम अ बुक और बुक को भी आगे बढ़ेंगे तो इट बिकम्स अ सीरीज ऑफ बुक सीरीज बोल सकते हैं उसको भी आगे लिखेंगे तो इट बिकम्स एनसाइक्लोपीडिया तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लिखने के लिए शुरू करना है यू नीड टू स्टार्ट राइट अवे दैट इज द ओनली वे टू स्टार्ट राइटिंग अ बुक और क्रिएटिव राइटिंग इज समथिंग दैट यू लर्न ऑन द वे ऐसे नहीं कि आपने एक कोर्स कर लिया क्रिएटिव राइटिंग का एंड यू स्टार्ट राइटिंग इट एंड देन द क्रिएटिविटी कम्स अप नो यू नीड सम टाइम इट टेक्स टाइम टू मेक अ राइटर क्योंकि द थॉट्स फ्लो इन व्हेन यू टेक अप न्यू आइडियाज टेक टाइम टू कम अप or the education system which we are in not necessarily will contribute to creative writing but yes through your personal interests and how to you know, go about with that आपका जेंडर क्या है आपका आइडेंटिटी या आपका किसको आप टारगेट कर रहे हैं वो सब लेके आप एक राइटर बन सकते हैं डेफिनेटली तो हैविंग सेड अबाउट दैट कि राइटर बनने के लिए सबसे पहले आपको कुछ तो पढ़ने पड़ेंगे ना कि आप किस चीज़ पे आप लिखना चाहेंगे वो भी पता करने के लिए आपको पढ़ने तो ज़रूर पड़ेंगे पढ़ने के अलावा आपको कोई ऐसा कोई ये नहीं है या तो फिर आपको you have to ponder over but to that also you need some minimum amount of knowledge about which you want to write so when you
read things, certain advantages which you get are that आपको एक तो vocabularies को ध्यान में आएगा, कौन सा vocabulary कहाँ use करना है, sentence formation याद आती है कि किस प्रकार का sentence लिखना है, long लिखना है या short लिखना है, इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूँगा, और पैराफ्रेजिंग और सेक्शनिंग कैसे करना है ये आएंगे, और कनेक्टिंग बिटवीन टू लाइंस एंड पैराफ्रेजिंग एंड कनेक्टिंग बिटवीन टू पैराग्राफ्स। तो ये सब जब तक ध्यान में नहीं आएंगे तो ये सब लिख के ही आएंगे। और हमेशा ये ना सोचें कि जो पहली बार लिख रहा हूँ वही फाइनल है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। कम से कम आपको जितने बार आप इसको रिवाइज करेंगे, जितने बार आप उसको रीराइट करेंगे, रीराइट करेंगे, तब जाके वो फाइनल ड्राफ्ट में आती है। एंड दिस इज द सेम केस विद एवरी ऑथर्स, एवरी राइटर्स। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो जिनका पहली बार लिख लिया और वही है, वही एक क्रिएटिव राइटिंग बन गई, क्योंकि क्रिएटिविटी कीप्स ऑन इंप्रूविंग। ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि यही सीमा है क्रिएटिविटी का, बिकॉज इट हैज नो लिमिट, सो इट कीप्स ऑन गोइंग। जितना आप समय दे सकते हैं राइटिंग पे उतना अच्छा आपका लेखन निकलेगा। और इसमें डेफिनेटली दो चीज जो मेरे को लग रहा है कि बहुत जरूरी है, वो है पेशेंस। कि आपको एक दिन में आपको एक नॉवल या एक दिन में एक राइटअप, एक दिन में एक एस्से लिखना मुश्किल है। लिख सकते हैं लेकिन क्वालिटी भी उस प्रकार के ही होंगे। तो यू हैव टू कंसिस्टेंटली एंड पेशेंटली परस्यू this particular dream or this particular interest in writing. Only then you can rewrite, you can gain more knowledge, gain more insights through interaction with others, just like you're all interacting today, and practicing. Only then it's possible to go ahead. Or just like I said, that first draft is not the final draft. And many people, what they do is they first write and then they see, अरे यार ये हुआ नहीं है, टीचर को दिखा है, टीचर ने बोला ये है वो है, then people tend to stop it. But that is not the way. You'll have to keep on consistently pursuing it, rewriting it, as I said earlier. And तो उसमें जब आप फर्स्ट ड्राफ्ट लिखेंगे, उसमें it can also be just blueprint of what you're going to write. Not necessarily in sentence formation, it can be in points, bulletin points, कि ये लिखेंगे, ये करेंगे। और उसमें आइडियाज, अगर आप नोवेल लिखना चाहते हैं तो कैरेक्टर्स को लाना पड़ेगा। अगर आप एक मल्टीडिसिप्लिनरी बुक लाना चाहते हैं तो उसमें आप क्या कॉन्सेप्ट लाना चाहेंगे, क्या फैक्ट्स लाना चाहेंगे, उसको आप स्क्रिबल कर सकते हैं। क्योंकि जब आपका माइंड का ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, जब आइडियाज फ्लो लाइक रिवर, to research upon a particular topic and then to write upon that topic, these two are two different things. तो जब आप रिसर्च करेंगे उस समय अगर आप सोचेंगे कि अभी लिखूंगा, तो फिर वो, क्योंकि दोनों समय पर आपका ब्रेन का वर्किंग पैटर्न्स अलग होते हैं। तो when you are researching, you tend to research, you collect information, you collect the knowledge either in these e format or in the hard format, and you keep it. And then when you are researching it, collecting it, researching it, and then writing it, aspects. Three different aspects are there in this, as far as my experience is concerned. And I have observed that whenever I collected information, I was not in the mood of writing. And whenever I was researching on the collected information, I was not in the mood of collecting. And whenever I was writing the draft, I was never in the mood of collection or in the mood of researching. Even though those things came, I used to bookmark that and go back to it. But these three patterns you'll have to recognize as a writer, as a prospective writer. You have to recognize what are these timings, best timings for you to research, for you to write, and then gradually you will have the flexibility to do simultaneously things. Like 5 years before, I was not in a position to do things simultaneously, but now, like with advanced writing tools and with the MS Office itself, it's a very big tool which can simplify your writing. Because in earlier days, everything had to be done manually. You had to go to a library, you had to search the catalog, you had to search the cupboard, you had to search the rack, you had to search the book, and then in the book, the particular knowledge, whether you have it or not sure of it. But now, with the advent of World Wide Web and the advent of many artificial intelligence softwares, it is easier to find facts. Just that you have to check whether the facts are genuine or not. So you have to cross-check that you will have to do. And then even after, while writing, there are many applications like Grammarly to check the grammar aspects, which give you better options. Word का कुछ शब्द का better words आपको देंगे. तो ये सब आधा काम तो
आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देगा. बाकी you just need to concentrate on the concept, on the ideas, on the facts which you want to collaborate together to bring up the paraphrasings. तो इसमें so basic thing is that initially writing can be a messy thing. It's not going to be that interesting. Initially it will be a lot of scribbling, a lot of paperwork, a lot of collections इधर उधर उधर. और ये जब तक होगा जब तक आपका बुक प्रिंट होकर बाहर ना आए, because the publisher also will have their own ideas of how they want the book to be, so they will all think over that also. तो आप बार बार चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपका लैंग्वेज का भी चीज़ें आएंगे और ग्रेजुअली जो क्रिएटिव आइडियाज विल कम अप, आपका खुद का भी आइडिया आएंगे. So that is how this entire world is. I believe that the entire world is made up of creatively thinking because they have put on the time on the basic fundamental work. So, and third important thing is that understanding the reader's mind. Who are your target audience? If you're writing for the children's, then you'll have to think like a child. If you're writing for a general audience, then you need to have the perspective of a greater, wider audience so that they find it interesting. You cannot write a child's book, a book for children, and try to sell it to a mother, because a mother would buy it for her children, but not necessarily for themselves, right? So you have to think in that way. And again, इसको उस प्रकार के लिखना भी है, shorter sentence if it is for the children. Maybe if you are into academic writing, or if you are into, if you're preparing for civil services, then sentences and the number of words don't matter, but the clarity of ideas do definitely matter. So sometimes what is, according to me, the sleeping pill for readers that we call as jargon. Sometimes just to arrive upon a small idea, lot of things are introduced initially which not necessarily many readers would like to read. So we'll have to see that also initially, that you're not getting into too much of jargon, but making it more interesting, adding little bit of stories in between, adding bit of phrases in between, adding bit of philosophical explanations in between, so that you make it more interesting. And just like the reader should feel that they're watching a movie through the book. That is when they freely feel it interesting, because a movie runs so fast, and not necessarily the book, the reader will tend to understand the same in. So yeah, it's altogether on based on how exciting your creativity is and how you are putting it on paper. That's why I said it's a rewriting process continuously. And I want to I want to give two incidents which I came across during writing the book and also my PhD thesis. So one thing is that my sentences are very long, and some sentences go up to 90 to 95 words. I have never realized that it actually happened, because when you're totally immersed into writing, you're totally you totally like violate all the grammatical literature rules, that are fixed by the English grammar. You tend to violate everything, because you're totally concentrating on how the ideas turn into words. So in my thesis, my research guide, Dr. Rita Soni, she said that after reading one chapter, her first comment was that your sentences are as long as you. And by the time I finish reading that sentence, no, I forget what I read in the initial, because too much of commas, too much of buts and ifs, therefore. So you have the freedom to elaborate in such a way. But then again, it's into academic writing, so there is no, because you need to bring on paper complex ideas along with facts. So that happens sometimes. And another incident was that my publisher, Dr. Sankrant Sanu, he said that, like, if you are writing this big, then the students who are reading it, they might tend to forget what they read in the beginning, and then they may have to go again to the first few words to recollect what they had read, and that may cause, that the students may lose interest. The readers may lose read, because continuously when they incur with long sentences, that becomes a challenge for the readers. But I personally feel that always like short words are better, because it suits everyone. It suits every genre of readers. It suits all the audience, because I think short sentences are more concise,
they are very sharp. You're to the point, telling on the point, and you're also very concise. But again, we are talking about creative writing. Again, not necessarily you need to be sharp everywhere, but you need to be more communicative with the reader. So that is when I think the creative writing gets the higher point, wherein you do not go as per the or according to the tradition of writing, but you invent or you discover or rediscover certain steps, certain methods, wherein which readers find interesting, because in today's in internet era everything is available on net. So what is it that you are going to give new, because they're going to pay for what you're writing, not necessarily pay but also give the time to you to read what you're writing. So it takes that particular perspectives to do the writing. So this is what I wanted to share, because time is also less, and maybe we can have few questions later on after Anisha ji shares her thoughts. Thank you. Thank you, sir, for enlightening us upon creative writing, and I guess your ideas will be definitely helpful for us to go forward while writing and expressing ourselves. Now, I would like to call Anisha ji on the stage to share their thoughts. Please give a round of applause. Thank you so much, Ansh, and the organizing committee, everyone involved. It's a very good afternoon to everyone. आज सभी लोग जो हम लोग यहाँ जुड़े हैं स्टूडेंट्स ही हैं। इससे पहले मैं अपना सब बात शुरू करूँ, हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टडीज से रिलेटेड है, और जैसे सबरीश जी ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि किस तरीके से लिखना है, तो एक बैकग्राउंड सबके पास है कि लिखना क्या है, किस तरीके से लिखना है। मेरा पिछले 6-7 साल का एक एक्सपीरियंस रहा है राइटिंग, पब्लिकेशन में, एडिटिंग, ट्रांसलेशन में, और अपने एकेडमिक डेज में बैचलर्स से ही मैंने इसमें काम शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश लिटरेचर का है, तो मेरे लिए वो नेचुरली आया। मेरे पास एक प्रोफेशनल डिग्री थी सो टू से, जो मुझे थोड़ा सा हेल्प कर रही थी राइटिंग में। मुझे जब ये कैंपस क्रॉनिकल के लिए एडिटर की पोजीशन मिली थी, तो मेरा यही मानना था कि हम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास एक प्रोफेशनल डिग्री नहीं होती है। आप में से ज़रूरी नहीं कि सब लोग जो यहाँ पे हैं कहीं ना कहीं साहित्य, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी, उससे जुड़े हुए हैं, पर लिखना चाहते हैं और लिखने का एक अनुभव भी है कहीं ना कहीं। तो उन बच्चों को कैसे जोड़ा जाए, तो इसलिए फिर कैंपस क्रॉनिकल का जब मुझे पता चला कि आप इसमें एडिटर बनिए, और एक ई मैगजीन है, ई पोर्टल है, जहाँ पे हम अक्रॉस दिल्ली जितने भी कैंपसेस हैं उनमें बच्चों को लिखने के लिए स्पेस देते हैं और उनके आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, ऑफ कोर्स विदाउट एनी चार्ज ऑफ एनी फीस। तो इसी से थोड़ा बहुत हम लोग मैं बैकग्राउंड इसलिए देना चाह रही थी क्योंकि कैंपस क्रॉनिकल इज़ वन ऑफ द इनिशिएटिव्स जो आज यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, युवा के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। तो उसके बाद बेसिक जो हम लोग समझ चुके हैं कि लिखना है और किस तरीके से लिखना है, अब इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आएगी जो लिखा जाए, क्योंकि वर्कशॉप है तो थोड़ा इंटरैक्टिव रखते हैं, एक वन साइडेड लेक्चर ना हो जाए, क्योंकि लेक्चर आज पूरा दिन भर चलेगा। तो अगर थोड़ा वर्कशॉप के हिसाब से कुछ 2 छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करेंगे, आप लोग का भी ब्रेन एकदम चार्ज अप हो जाएगा और सब लोग जाग जाएंगे। आफ्टरनून है, थोड़ा नींद आती है, पर कोशिश करेंगे कि सब लोग इंटरैक्ट हो। तो एक्टिविटी ये है कि एक वर्ड एसोसिएशन गेम है। अगर एक वर्ड कोई एक व्यक्ति कहता है, उससे एसोसिएटेड क्या दूसरा आपके ध्यान में आता है। सपोज मैंने शुरू किया और मैं कहूँ मॉनसून, तो मॉनसून से किसी को पकौड़े याद आएंगे, किसी को चाय याद आएगी, किसी को कीचड़ याद आएगा, तो वो ऑन एंड ऑन एक एसोसिएशन गेम हो जाएगा। ऐसे ही वर्ड्स एसोसिएट करके यू फॉर्म अ स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज अ सेंटेंस। सेंटेंसेस जुड़ जाते हैं और आपका पैराग्राफ बन जाता है। अभी क्रिएटिव राइटिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं, इसलिए यू हैव मॉनसून, बारिश, कीचड़ एंड एवरीथिंग। एकेडमिक राइटिंग में कीचड़ नहीं लिखिए प्लीज, सबसे ये अनुरोध है, तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे ही हम लोग एक छोटा सा इंटरैक्टिव शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे, एक एक वर्ड सब लोग जोड़ते जाएंगे जो भी ध्यान में आ रहा है। मैंने शुरू किया मॉनसून से, आप बताएं।
थोड़ा जोर से ताकि सबको सुने और सब रेडी रहे। चाय बढ़िया। अब बताएं कुछ चाय से रिलेटेड। नहीं, पकौड़े बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, अब बताएं। बढ़िया। थोड़ा जोर से। बातें बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक टेंडेंसी है कि जब देयर इज रेनफॉल तो शायद दो दोस्त कहीं कोने में बैठ के बात कर रहे हो। तो दिस इज अ सिनेरियो गोइंग ऑन इन योर ब्रेन। सो व्हेन यू सिट टू राइटिंग, मे बी दिस इज अ सिनेरियो यू कैन पेन डाउन। ये एक ऐसा एक सीन है जो किसी के दिमाग में कहीं से आया है। नेक्स्ट प्लीज। गॉसिप्स बहुत बढ़िया। गॉसिप तो होती ही है, मॉनसून में तो बनती ही है। जी जल्दी जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है, एक्सटेम्परी है एकदम। जी ट्रैवल। जी ट्रैवल हो गया, उसके बाद बताए। रोमांस। जी नेक्स्ट जल्दी। जी जी। माइक भी दे दीजिए। बच्चे अब थोड़े से मुझे लग रहा है इंटरैक्टिव हो गए हैं। बारिश में नहाना। बिल्कुल, ये बहुत देर से मिसिंग था, बारिश में नहाना। बहुत लोगों को डांट पड़ती है बारिश में नहाने से। मैम गेटिंग वेट, मैम बारिश में भीगना एंड हैंगिंग आउट विद गर्लफ्रेंड। जी जी। नेक्स्ट प्लीज। काफी इंटरैक्टिव हो गए बच्चे अब। जी नेक्स्ट प्लीज। कोई और। मैम ग्रीनरी। ग्रीनरी। जी बिल्कुल बिल्कुल। बारिश में तो वैसे भी बहुत ज्यादा हम लोग नेचर से और कनेक्ट हो जाते हैं। मैम मुकेश कुमार के गाने। मुकेश कुमार के गाने बहुत बढ़िया। अब बारिश होती है ना, जो उसकी जो बूंदी धरती पे गिरती है, उसकी खुशबू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उस खुशबू का एक पर्टिकुलर नाम है। उस खुशबू को एक पर्टिकुलर वर्ड से हैप्पीनेस। वो ढूंढिएगा। बहुत बढ़िया, हैप्पीनेस। ताजी हवा। ताजी हवा। जी बहुत, दिखने वालों को तो सख्त आवश्यकता है इसकी है। और कोई इस साइड से अगर कोई। मैम वो माइन्यूट ड्रॉपलेट्स जो फेस पे आते हैं और जी जी। और उसके बाद जब बारिश हेवी होता है और कहीं ओले भी पड़े तो उसका भी ध्यान रखिएगा। सुकून। जी सुकून, बिल्कुल बिल्कुल। जो बिल्कुल हॉस्टल की मेमोरी। बारिश में अम्ब्रेला के अंदर रोमांस। जी जी। ये काफी रिपीट हो गया है, पिछले 5 मिनट में काफी रिपीट हो गया है। छोटे बच्चों का होता है पानी में नाव चलाना। बिल्कुल, वो शायद सभी ने किया होगा, हम सभी ने। तो ये ऑलमोस्ट हर किसी की एक मेमोरी है जो सिर्फ बारिश को इन्वोक करने से आए। हर किसी का एक शेयर्ड चाइल्डहुड है। तो हम लोग आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग आज पहली बार मिले हैं। पकौड़े सबको याद है, चाय सबको याद है। जी वर्किंग ऑन क्लास विदाउट स्लीपर। जी बिल्कुल। दैट इज अ डिफरेंट टच। मे बी आप वैसे नहीं उसको फील कर सकते, पर बारिश में तो बिल्कुल। और किसी का कोई और जो ध्यान में आ रहा है, या सब कवर हो गए? जी मैम पहले बारिश के समय लाइट चल जाती। जी पहले बारिश में लाइट चल जाती। हम मोर का नाचना। मोर का नाचना, बिल्कुल। मैगी किसी को याद नहीं आई बारिश पे? मैगी खाना, मैगी पॉइंट पे। वो एक काफी कॉमन चीज होती है जो हम लोग। मैम लाइटनिंग। लाइटनिंग, बिल्कुल बिल्कुल। थंडरस्टॉर्म, हेल, तभी के मतलब दिमाग खुल रहा है। सुदामा अंकल का चाय। अच्छा चलिए बढ़िया।
मैम एट द टाइम फ्रेश फिश। जी 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 बिल्कुल। और कोई? मैम बिकमिंग ऑफ रेनबो। जी जी, रेनबो काफी देखने में भी सुंदर लगता है और काफी सारी मेमोरीज उससे भी कनेक्टेड होती है। हो गया ऑलमोस्ट सबका कवर, बाकी सबकी सिमिलर ही थॉट्स है। तो इसके इससे हमें ये क्या पता चला इस छोटी सी एक्सरसाइज से कि एक पर्टिकुलर हमने सीजन उठाया, उस सीजन से रिलेटेड इतनी सारी हमारी मेमोरीज हैं और उन सारी मेमोरीज से हमने कहीं ना कहीं एक चीज ये देखी कि इन्हें लिखा जा सकता है, आप इन्हें रिकॉल कर सकते हैं इन मेमोरीज को। So if you have the tendency to recall a certain event, you can definitely pen that down, right? जिसको चाय याद आई, जिसे रेनबो याद आया, जिसे रोमांस याद आया, जिसे मैगी याद आई, ये लिखा जा सकता है। यही पोइट्री है। So when you recollect something and you write that down, में जरूरी नहीं कि सब उसमें से सच हो, जरूरी नहीं कि आपने मार्स पे कुछ ऐसा देखा है और उसको अभी लिख रहे हैं। इट्स मोर ऑफ इमेजिनेशन, कहाँ इमेजिनेशन कहाँ तक लेकर के जाती है। सो दिस वाज अ वर्ड एसोसिएशन गेम जो हम लोग जनरली वर्कशॉप्स में करते हैं। और इफ आई गिव यू अ पर्टिकुलर सिनेरियो कि सोचिए एक डार्क एले में जा रहे हैं, बिल्कुल एकदम हॉरर फिल्म वाला सिनेरियो है, उसमें चलते जा रहे हैं और एंड में एक रूम है, द रूम इज लॉक्ड, you have the key, you open the room, everyone who is here will think of a different scenario, room के उस साइड क्या है। किसी को लगेगा शायद एक किलर मर्डरर है, किसी को एक फैंसी लैंड लगेगा, किसी के लिए एक पैरेलल डायमेंशन हो सकता है। साईफाई, एनी साईफाई फैंस हियर? जी बढ़िया। सो हर कोई किसी ना किसी तरीके से उसे इमेजिन करेगा। सो दैट इज हाउ यू बिगिन राइटिंग, एक सिनेरियो इमेजिन करो और उसको लिख दो। सो एनीवन हैज एवर रिटन एनी पोएम? बिकॉज वी आर जस्ट अबाउट टू एंड दिस सेशन। कभी किसी ने कविता लिखी है? जी बहुत बढ़िया, सुजल जी ने भी लिखी है, बहुत बढ़िया। जी जी बहुत बढ़िया। कभी कोई शॉर्ट स्टोरी ट्राई किया हो? बढ़िया। आपने पोइट्री भी लिखी है, शॉर्ट स्टोरी भी लिखी है, अब तो पढ़नी पड़ेगी। और आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, बहुत बढ़िया। जी अब तो है ही। तो ऑलमोस्ट एवरीवन हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग। अब इस राइटिंग को थोड़ा थोड़ा अपने टाइम टेबल में एक पर्टिकुलर आवर, बिकॉज राइटिंग इज अ क्राफ्ट, इट्स नॉट एन आर्ट, इट्स अ क्राफ्ट दैट यू हैव टू पॉलिश ऑन। ऐसी चीज है जो धीरे धीरे काम लिखने से ही आएगा। और जो लास्ट बेंचर्स हैं उनसे अनुरोध है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस एंड करने वाले हैं। क्रिएटिव राइटिंग की वर्कशॉप है, थोड़ा सा ध्यान। बाकी किसी को कुछ कहना है तो माइक पहुंचा देंगे, ठीक है? चलिए। और also if you want to get something published, you are interested into writing something, कुछ ऐसा लिखते हैं आप which you think needs to be published, has to be published, and you really believe in your write up, maybe you can send that to Campus Chronicle. हमारे बहुत सारे volunteers यहाँ पे हैं, they can help you with the technical things, and we can see उस article को किस तरीके से we can go back and forth और उसको polish करके we can publish it. So if you are interested into writing, we are providing you a safe place to get published. And that is, I suppose, it for today. Thank you so much. You have been a lovely audience. Thank you. काफ़ी आई थिंक क्लैरिटी मिल गई होगी राइटर्स को, सबके इतने अलग अलग थॉट्स बोल सकते हैं, वाइल्ड थॉट्स भी से बैठो ना है, किसी को भी ना है, तो आई गेस वो एक थॉट ही हो गया। तो आई थिंक काफ़ी राइटिंग की पर्सपेक्टिव से काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी। एंड हु वांट टू राइट और जो लिखना चाहते हैं पोइट्री वगैरह, तो आई थिंक काफ़ी वैल्यूएबल सेशन हुआ होगा आई गेस हम सबके लिए भी, और मैम के ये इंटरेक्शन वगैरह काफ़ी अच्छा होगा। So thank you so much everyone. So that's it. Give a round of applause for them. One more thing, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो अपनी पोएम्स और राइटिंग्स को पब्लिश कराने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो हमारे कैंपस क्रॉनिकल्स में आप उसे अपने राइटअप को दे सकते हो, हम लोग उसे फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिश कराएंगे। और हमारी जो ई मैगजीन है कैंपस क्रॉनिकल, वो JNU और जामिया मिलिया इस्लामिया और बेसिकली दिल्ली की सारी यूनिवर्सिटीज़ और JNU में
इसकी रीडरशिप है. So basically it's a very good platform for writer जिसको poetry लिखनी है, जो articles लिखते हैं, जो basically write-ups लिखते हैं, लेकिन होता है कि publish कराना है उन्हें. So I think Campus Chronicles is a very good opportunity for every writer, I guess. और जो writing की field में जाना चाहते हैं, जो already हैं, so Campus Chronicles is a, I think, very good opportunity for everyone. So I guess it's the end of our session. Thank you so much.